Hello students, welcome back to the class. Today we are going to discuss another question based upon accounting equation. As you know, the accounting equation means asset should be equals to liabilities plus capital. So we will discuss a question in which we will have to adjust the transaction on this equation. So the question states that Manoj started business with cash, goods and bill. So all these three things will contribute to the capital. Cash and goods plus building, that is 5,30,000 will be the amount of his capital. Then he's purchasing goods for cash, that means there will be increase in goods and decrease in the cash. Then he sold goods costing 20,000 for 35,000. So goods will decrease by 20,000 whereas the cash will increase by 35,000 and the profit of 15,000 will be transferred to the capital account. Then he is purchasing goods from Rahul, that means goods are being purchased on credit. So we will add 55,000 to the stock, but the 55,000 will not be deducted from cash but shown on the creditors. The next point states he sold goods to Varun costing 52,000 for 60,000. स्टॉक में से कम होगा 52,000, ठीक है, स्टॉक में से कम हुआ 52,000 and profit of 8,000 will be added to capital. The 60,000 will be shown in debtors because the goods have been sold on credit. The next point is he paid cash to Rahul in full settlement. From Rahul he had purchased goods of 55,000 but he is selling him goods of 50 but he is sending in cash 53,000. So there will be decrease in creditors by 55,000, decrease in cash by 53,000 and the increase in capital by 2,000 which is the profit earned. नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी पेड, सिंपल है, कैश इन कैपिटल में से माइनस करेंगे. देन है कैश रिसीव फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट. वी हैव सोल्ड गुड्स फॉर 60,000 रुपीज टू वरुण बट ही इज पेइंग अस 59,000 इन फुल सेटलमेंट. सो कैश में वी विल ऐड 59,000. फ्रॉम डेटर्स वी विल डिडक्ट फुल 60,000 एंड 1,000 विल बी आवर लॉस. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट मीन्स रेंट विच इज ड्यू बट नॉट पेड. तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे and it will be shown on liability side as outstanding expenses. Next is commission received by him. When a person is receiving commission, it will increase the cash as well as capital. So इसको हम cash में और capital दोनों में plus कर देंगे. The amount withdrawn from personal use expense है, cash और capital में से minus. And the last point, depreciation charged on building, it is a loss, so capital में से deduct and building में से भी minus. So the equation will look something like this. For the first point, when you are starting business with cash, goods and building, in cash you will write 2,30,000, in stock we will write 1 lakh and in building 2 lakh. The total capital will be 5,30,000. Next is purchase goods for cash, so we will deduct 50,000 from cash and add 50,000 to stock. The equation will look like 1,80,000 cash, 1,50,000 stock, building of rupees 2 lakh and capital of rupees 5,30,000. Next point states sold goods costing 20,000 for 35,000. The value of good is 35,000, that means stock में से the value of good is 20,000, that means stock में से minus होगा 20,000 and in cash we will add 35,000 because it is the cash which we are receiving and the difference of 15,000, that is the profit earned, will be added to the capital. Next is purchase goods from Rahul. We are purchasing goods from Rahul, तो कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है. स्टॉक में प्लस करेंगे 55,000 एंड क्रेडिटर्स में इट विल बी शोन ऑन क्रेडिटर्स 55,000 बिकॉज वी आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. क्रेडिटर्स में शिफ्ट शो करेंगे हम 55,000. द इक्वेशन विल बी कैश विल रिमेन द सेम 2,15,000, स्टॉक विल बी 1,85,000, building will again 2 lakh and creditors by 55 in capital of 5,45,000. The next point states sold goods to Varun costing 52,000 for 60,000. स्टॉक में से 52 कम हो रहा है, 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है विच विल बी एडेड टू कैपिटल एंड डेटर्स में ऐड करेंगे 60,000, ठीक है ना. डेटर्स में ऐड करेंगे 60,000 बिकॉज कैश में रिसीव नहीं हो रहा है, वी आर सेलिंग इट ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट है you are paying cash to Rahul 53,000 full settlement. Rahul is the creditor जिसको 55,000 पे करना है
but we are paying him 53 and that is in full settlement. क्रेडिटर में से फुल 55,000 माइनस होगा, कैश में जितना हम पे करें 53,000 माइनस होगा, and that 2,000 of discount which you are receiving as a profit, that will be added to the capital. Next point is salary paid, that is an expense, and expense will be deducted from cash and capital. 20,000 will be deducted from both cash as well as capital. And then we are receiving cash from Varun in full settlement. From Varun we have to receive 60,000 but we are receiving only 59,000. तो डेटर में से पूरा 60,000 माइनस किया, कैश में 59,000 प्लस किया, एंड इन कैपिटल वी विल डिडक्ट 1 लाख रुपीज़ बिकॉज दैट इज़ अ लॉस फॉर द फर्म. 1 लाख रुपीज़ 1,000 का लॉस हो रहा है तो दैट विल बी डिडक्टेड. द इक्वेशन विल बी कैश ऑफ 2,01,000, stock of 1,33,000, buildings of 2 lakh, there are no debtors and creditors, and the capital is 5,34,000. Next point is rent outstanding. Outstanding rent means the rent which is due but not paid. Now this is an expense of current year. This is an expense of current year, so it will be deducted from capital, but it will not be deducted from cash because cash तो pay किया ही नहीं है. It will be shown on the liability side as outstanding rent. तो कॉलम बन जाएगा नया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और उसमें हम 3,000 शो करेंगे. द नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड. कमीशन रिसीव्ड इज अ इनकम, कैश में एंड कैपिटल में कर देंगे प्लस. कैश में 13,000 प्लस, इन कैपिटल में भी 13,000 प्लस. नेक्स्ट इज विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. वी आर विदड्रॉइंग फॉर पर्सनल यूज, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश में और कैपिटल में दोनों में से कर देंगे माइनस. 20,000 इन कैश, 20,000 फ्रॉम कैपिटल. नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग. डेप्रीसिएशन मीन्स डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ड्यू टू यूजेज. लॉस है तो कैपिटल में से माइनस होगा, एंड बिकॉज वी आर रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग तो बिल्डिंग में से भी करेंगे इसको माइनस. द फाइनल इक्वेशन विल बी कैश ऑफ 1,94,000, स्टॉक ऑफ 1,33,000, बिल्डिंग ऑफ 1,90,000. देयर विल बी नो डेटर, नो क्रेडिटर, इन आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ 3,000 एंड कैपिटल ऑफ 5,14,000. सो द टोटल ऑफ बोथ एसेट्स एंड liability side is equals to 5,17,000. So this was it. This is how we will do questions based on accounting question when there is outstanding expenses and depreciation given in the question. In the next video we will discuss further more points. Till then, take care and have a great day.